যোৱা ইংৰাজী 15 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ 57 সংখ্যক প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি জিলা পুথিভঁৰাল ডিব্ৰুগড়ত এটি সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠান বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে আকাশবাণীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান আশিষ ভাটনাগৰ আৰু আকাশবাণী নতুন দিল্লীৰ অনুষ্ঠানৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান পলিচি দীপক যোশী। সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জীৱ কাকতিৰ লগতে আন কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি, আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ সমূহ বিষয়া কৰ্মচাৰী, দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ ডিব্ৰুগড়ৰ বিষয়াসকলৰ লগতে আন বহুতো গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে। আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ দ্বাৰা পৰিৱেশন কৰা সমবেত সংগীতেৰে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰা হয়। ইয়াৰ পাছতে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ ভাষণ প্ৰদান কৰে আকাশবাণীৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান আশিষ ভাটনাগৰদেৱে।
आमतौर पर नर्वस होता नहीं हूँ, लेकिन आज इतने दिग्गज इस हॉल में बैठे हैं, आपके सामने यदि मैं कुछ कहूँ तो कभी ऐसा लगता है कि जुगनू, जिसको होमियात बोलते हैं, जोनाकी, वो सूरज के सामने अपनी रोशनी दिखा रहा हूँ। आपके सामने मैं क्या कहूँ, फिर भी चूँकि आदेश है मेरे दोस्तों का, उनका प्रेम है, वो मेरे लिए बंधन है। मुझे लगता है कि आज कौन किसको बधाई दे। बधाई वो दे जिसका रेडियो है दूसरों को। फिर ये रेडियो है किसका? आकाशवाणी। कभी सोचता हूँ कि ये एडीजी का है, कि अनाउंसर का है, कि उन इंजीनियर्स का है जो रेडियो चलाते हैं, या उन लोगों का है, मेरे उन वरिष्ठों का, जिन्होंने रेडियो को इस मुकाम तक पहुंचाया, इतना सुंदर बनाया 57 सालों में काम कर करके कि हमें यहाँ काम करने में गर्व होता है। या उन इतने कलाकारों का है जो कि सुंदर सुंदर रचनाएं हमारी रेडियो के ऊपर प्रसारित करते हैं, अपने संगीत वाद्यों से, अपनी बातों से। या उन हजारों लाखों श्रोताओं का है जो कि हमारे लिए देव समान है, जो रेडियो सुनते हैं, हमें सराहते हैं, हमें सुधारते हैं। और बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आकाशवाणी आकाश की तरह है। ये छत मेरी हो सकती है, वो छत तुम्हारी हो सकती है, वो छत किसी और की हो सकती है, लेकिन आकाश हम सबका है। वैसे ही आकाशवाणी एक का नहीं, दो का नहीं, अनेक का नहीं, सबका है। और यही खूबसूरती है आकाशवाणी की। अमीर का है, गरीब का है, महिला का है, पुरुष का है, अलग प्रांत का है, कोई सीमाएं नहीं है, सीमाओं के पार है, जन जन तक पहुंचता है। और मैं भी डॉक्टर साहब से बात कर रहा था, आज के दौर में जब हर तरफ शोर है, चीख है, चिल्लाहट है, चैनलें हैं, लड़ाई है, झगड़ा है, पटाखे हैं, वहां पर यदि कृष्ण की बंसी की तरह लाहे लाहे कोई हमारे दिल को सहलाता है, तो शायद वो आकाशवाणी का प्रसारण है। मैं आकाशवाणी कर्मियों को, आकाशवाणी डिब्रूगढ़ के आज के सभी कर्मियों को आज के शानदार प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं उन सब अपने पुराने सीनियर्स का नमस्कार करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आपके आशीर्वाद से हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। हमें आशीर्वाद देते रहिए, आशीष देते रहिए। आपकी चलाई हुई परंपरा को हम आगे बढ़ा सकें। और श्रोताओं से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे ही प्यार अपना हमें देते रहिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। एक जन संदेश, एक निवेदन आप सबसे फिर दोहराना चाहता हूँ। लोगों के जन्मदिन आते हैं, शादी की सालगिरह आती है, कोई मौके आते हैं जब हम लोगों को फूलों का गुलदस्ता देते हैं, जब हम लोगों को केक देते हैं। आप विचार करिए, 1000 रुपये का एक रेडियो अमेज़न पर, फ्लिपकार्ट पर, तमाम जगह अवेलेबल है। एक रेडियो खरीद के दीजिए। एक बच्चा अपने दादा को, अपने ग्रैंडफादर को रेडियो दे। एक समृद्ध पुरुष अपने घर में काम करने वाली महिला को एक रेडियो दे। एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को एक रेडियो दे। एक समाज का लीडर 500,000 लोगों को रेडियो दे। तो इस रेडियो के माध्यम से हम लोगों में पॉजिटिविटी बांटेंगे, हम लोगों के में मुस्कान बांटेंगे, हम समाज को सुंदर बनाएंगे, हम समाज में प्रेम फैलाएंगे। और डिब्रूगढ़ से उगता हुआ वो प्रेम का सूरज पूरे आसाम को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को एक खूबसूरत रोशनी, एक खूबसूरत खुशबू, सुगंध देगा, चंदन सी सुगंध। और हम सब कृतज्ञ होंगे। আমি আমার সম্মানীয় অতিথি হিসাবে এই অনুষ্ঠান সম্বোধন কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ সঞ্জীৱ কাকতি। তেখেতক আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো। সম্বৰ্ধনা জনাইছে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰ্যালয় অধ্যক্ষ কেনিয়ালো কেন ৰেংমা ডাঙৰীয়াই।
আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ এই শুভ দিনত তেখেতক সন্মানীয় অতিথি হিচাপে দুআষাৰ বক্তব্য প্ৰদান কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত জয় জয়তে আকাশবাণীৰ সমগ্ৰ পৰিয়াললৈ মই জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। লগতে মোক আমন্ত্ৰণ কৰি মাতি বিশেষ অতিথিৰ মৰ্যাদা দি এই আপোনালোকৰ বিজ্ঞসকলৰ আগত থিয় হৈ দুআষাৰ ক'বলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে মই লোহিত ডেকা প্ৰমুখে সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বহি থকা অৱস্থাত ডেকা ডাঙৰীয়াই মোক ক'লে যে দুআষাৰ ক'ব লাগিব। দুআষাৰ ক'বলৈ বুলি কওঁতে ডাক্তৰ যদিও মোৰ বুকু ধপধপ কৰিছে, কাৰণ আমি সাধাৰণতে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগীৰ লগতহে এটা নিৰ্দিষ্ট কোঠাত কথা পাতোঁ। এনেকুৱা পৰিৱেশত ভাষণ দিয়াৰ মোৰ অভ্যাস নাই। তেখেতক মই সুধিলোঁ মই কি ক'ম। এটা কথাই ক'লে যে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় ৰেডিঅ'ৰ যোগেদি শুনি এইটো ডাঙৰ হ'ল, সেইখিনি কথা ক'লেই হ'ব। এই আধা ঘণ্টা সময় মই মনত পেলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে আমাৰ শৈশৱ কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ল, শৈশৱৰ লগত ৰেডিঅ'ৰ কি মহত্ব আছিল। জন্ম হোৱাৰ প্ৰথম সময়ছোৱাত আকাশবাণী গুৱাহাটীত শুনিছিলোঁ। বুজা নুবুজাৰ সময়খিনি যেতিয়া বুজিব পৰা হ'লোঁ, তেতিয়া আকাশবাণী ডিব্ৰুগড় লগতে আকাশবাণীৰ অন্যান্য কেন্দ্ৰসমূহৰ প্ৰচাৰ বেলেগ বেলেগ প্ৰগ্ৰেমবিলাক শুনিবলৈ অভ্যাস লৈছিলোঁ আৰু ৰেডিঅ'টো এটা অভিন্ন অংগ আছিল। মনত পৰিছে পৰীক্ষাৰ সময়তো যেতিয়া পঢ়ি পঢ়ি কিতাপত আমনি লাগিছিল, টেবুলৰ পিছফালে ৰেডিঅ'টো কম সুৰত বজাই গানেই হওক বা অন্য এটা প্ৰগ্ৰাম বনোৱাৰ পিছতহে পঢ়াত বেছি মন বহিছিল। দেওবৰীয়া মইনাৰ চৰা এটা অনুষ্ঠান আমি সৰুতে সদায় শুনিছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা সদায় ৰেডিঅ'ৰ কাষত ৰৈ আছিলোঁ। ৰাতিপুৱা 9টা বজাত আৰম্ভ হৈছিল, মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই। কৈশোৰ আৰু জৈৱনৰ সময়ত যুৱবাণী অনুষ্ঠান সন্ধিয়া আৰম্ভ হৈছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে সদায় ৰৈ আছিল। তাতোকৈ অকণমান ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত ক্লাছলৈ, ৰাতিপুৱা কলেজলৈ ক্লাছলৈ দৌৰি যোৱাৰ সময়ত যিটো গীতৰ শৰাই অনুষ্ঠান আৰম্ভ হয় 8টা, 8:30 বজাত, সেইটো বাজিলে গম পাম যে ক্লাছলৈ যাবৰ হ'ল। আৰু গান শুনি থাকোঁতে চাহ খাই ক্লাছলৈ ওলাই যোৱাটো এটা নৈমিত্তিক এটা অভ্যাস আছিল। দুপৰীয়া ভাত খাবলৈ আহোঁতে পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠান যিটো আছিলে 12টা, 12:30 বাজিছিল, সেই পাশ্চাত্য সংগীতৰ অনুষ্ঠানৰ সোৱাদ লোৱাৰ কথাখিনি মনত পৰিছে। পিছত কোনো প্ৰগ্ৰেমত বিশেষভাৱে এই গয়াৰ ৰাইজৰ অনুষ্ঠানত কেইবাবাৰো আহি পেলাই গয়াৰ ৰাইজৰ কাৰণে স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় আলোচনাত ভাগ লোৱা মনত পৰিছে। মইতো 70, 80 দশকৰ বা 90 দশকৰ কথা কৈছোঁ। আৰু বিশেষভাৱে শীতকালি বা গ্ৰীষ্মকালীন যিখিনি অসুখৰ কথা থাকে আলোচনা কৰা। প্ৰথম ভাবিছিলোঁ এইবিলাকনো কোনে জানো আমি ভাবোঁ। তাৰ লগতে যেতিয়া টিভি আহিল, টিভিয়ে সমানে ফেৰ মাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, তেনেকুৱা এটা মনত ভাৱ হৈছিল যে হয়তো মানুহে নুশুনে। কিন্তু পিছদিনাখন যেতিয়া আউটডোৰ পেচেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত যেতিয়া বহি থাকোঁ, কোনোবা এজন বহু দূৰৰ শদিয়াৰ মানুহজন আহি পেলাই সুধিব, ছাৰ আপুনি ৰেডিঅ'ত যে কৈছিলে সেইদিনাখন এই কথাটো, মোৰ তেনেকুৱা লাগিছে সেইকাৰণে আজি আহিলোঁ। তেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে এই আকাশবাণীৰ প্ৰচাৰটো কিমান দূৰলৈকে শিপাই আছে, কিমান দূৰৰ মানুহে এইখিনি কথা উপকৃত হৈছে। এতিয়া আমাৰ ভাটনাগৰ ডাঙৰীয়াই বৰ ডাঙৰ কথা এটা কৈ গ'ল যে উপহাৰ কি দিব লাগে।
আমি বহু সময়ত বিয়া খাবলৈ যাওঁতে যে উপহাৰ কি দিম বহুত সময়ত মূৰ খুজাব লগা হয় কি উপহাৰ দিম অলাগতিয়াল বস্তুত পইচা খৰচ কৰি এটা উপহাৰ দিয়া যায় আৰু তেখেতে এটা খুব ডাঙৰ কথা ক'লে যে এটা ৰেডিঅ' দিব পাৰি আমাৰ চকু খোল খাইছে মই ভাবিছোঁ আজি সন্ধিয়া ইয়ালৈ অহাৰ মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সাৰ্থকতা হৈছে এই কথাটো যে উপহাৰ দিয়া এটা বস্তু বিচাৰি পালোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে এতিয়া মই কাষত বহি থাকোঁতে মোৰ লগত শৈলেন্দ্ৰ ডাঙৰীয়া বহি আছে তেখেতে মোক ক'লে যে ৰেডিঅ'ৰ প্ৰচাৰ বাঢ়িছে এতিয়া বয়স হোৱাৰ লগে লগে ৰেডিঅ'ৰ সম্পৰ্কটো বাঢ়ি যাব কাৰণ বয়স হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চকুৰ দৃষ্টিশক্তিবিলাক কমি যাব টিভি আৰু মোবাইলৰ প্ৰকোপটো লাহে লাহে কমি যাব আজি কিছুদিন আগতে মোৰ দেউতা ঢুকালে দেউতাৰ ঢুকোৱাৰ আগলৈকে একমাত্ৰ সংগীতটো আছিল ৰেডিঅ'টো বুকুত বান্ধিয়ে দেউতা গ'লগৈ তাৰমানে বুজা গ'ল তেখেত 90 বছৰলৈকে আছিল যে 60ৰ ওপৰ যোৱাৰ লগে লগে ৰেডিঅ'ৰ লগত সম্পৰ্কটো বাঢ়ি যাব কিন্তু এতিয়া আমাৰ হাতত মই এটা কথা কৈ সামৰণি মাৰিম আমাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আহিছে বিদেশতো আহিছে যে কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ পৰা মোবাইলৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব লাগে ইভেন দুই এখন কাণ্ট্ৰিত মোবাইল 18 বছৰ বয়সলৈকে বেন কৰাৰ কথাও উঠিছে যে মোবাইলৰ কুপ্ৰভাৱটো কি হৈছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা আহিছে মই ভাবোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা এই বৰ্তমান আধুনিকতাৰ কৃত্ৰিমতাৰ যুগত যান্ত্ৰিকতাৰ যুগত আমি মোবাইল আঁতৰাই দিলে তাৰ বিকল্প কিবা এটা দিব লাগিব তাৰ বিকল্প হয়তো ৰেডিঅ' হ'ব পাৰে সেইটো এটা ভাবিবৰ সময় হ'ল মই দীঘলীয়া আপোনালোকৰ সময় নলওঁ আৰু সকলোকে পুনৰবাৰ এই জন্মদিনৰ মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু উদ্যোক্তাসকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এই সন্ধিয়াখন আপোনালোকৰ লগত থাকি এই ধুনীয়া প্ৰগ্ৰেম উপভোগ কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে পুনৰ আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ সকলোলৈকে আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ সেৱা জনাইছোঁ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লৈ শ্ৰোতাসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ শিল্পীসকলৰ আশীৰ্বাদ লৈ যোৱা 56টা বছৰত সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো কাম নিষ্ঠা আৰু একাগ্ৰতাৰে কাম কৰি আহিছে সকলোৰে হিতৰ বাবে সকলোৰে সুখৰ বাবে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় মন্ত্ৰৰে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে সমগ্ৰ দেশৰ আকাশবাণীৰ কেন্দ্ৰবোৰৰ সৈতে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ে অনাতাঁৰ নাট সমাৰোহ 1993 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল 1993 চনত আমি যেতিয়া নেকি আকাশবাণীৰ অনাতাঁৰ নাট সমাৰোহ পাতিছিলোঁ তেতিয়া কিন্তু আকাশবাণীৰ স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত শিল্পীসকলৰ জৰিয়তে নাটক পৰিৱেশন কৰাই নিৰ্দিষ্ট আকাশবাণীৰ যিসকল পৰিচালক আছে প্ৰযোজক আছে তেওঁলোকৰ জৰিয়তে নাটক বাণীবদ্ধ কৰোৱাই পৰিচালনা কৰোৱাই নাট সমাৰোহ কৰা হৈছিল তাৰ পিছত দীৰ্ঘদিনৰ এটা বিৰতি আমি 2020 চনত অনুভৱ কৰিলোঁ যে আমাৰ ভাষাটোৰ আমাৰ সমাজখনৰ কিছুমান বিষয় আমি ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰেডিঅ'ই কিছুমান কাম কৰিব পাৰে সেয়া হ'ল যে ৰেডিঅ'ক কোৱা হয় যে ৰেডিঅ'ই অসমীয়া ভাষাটোৰ শুদ্ধ ৰূপটো যিমান পৰা যায় শুদ্ধকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু সেয়েহে আমিও যেতিয়া নেকি নাটকবোৰ চাবলৈ অন্য ঠাইলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া দেখোঁ যে যিসকল এমেচাৰ থিয়েটাৰ গ্ৰুপৰ নাটক কৰে তেওঁলোকে বাৰ্তা থকা যিবোৰ নাটক উপস্থাপন কৰে তাত ভাষাটোৰ শুদ্ধতাক লৈ বৰ বেছি গুৰুত্ব দিয়া নহয় কোনোবা চৰিত্ৰই সেই পৰিৱেশত এটা কথিত ভাষাৰ ৰূপত কিছুমান কথা ক'ব লাগে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু নাটকৰ সামগ্ৰিক উপস্থাপনৰ কথাখিনি ভাষাটো যে শুদ্ধকৈ ক'ব লাগে এই কথাটোত যেন গুৰুত্ব দিয়া নহয় তাৰপিছত আমি অনুভৱ কৰিলোঁ অথচ যে সেই অপেচাদাৰী যে বা তথাকথিতভাৱে সেই এমেচাৰ থিয়েটাৰ গ্ৰুপবিলাকে সমাজত অদ্ভুত এটা আন্দোলন আগবঢ়াই লৈ গৈছে
সমাজৰ মানুহখিনিক শুদ্ধ পথত থকা সমাজৰ মানুহখিনিক বিপথে পৰিচালিত নহবৰ কাৰণে কিছুমান বাৰ্তা লৈ তেওঁলোকে নিজৰ পেটত গামোচা বান্ধি হলেও নিজৰ পকেটৰ পইচা খৰচ কৰি হলেও তেওঁলোকে সমাজৰ এক আন্দোলন আগবঢ়াই লৈ গৈছে এই কামটোত যদি ৰেডিঅ' সংযোজিত হ'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমি আৰু এটা কাম কৰিব পাৰো যে সমাজৰ সেই আন্দোলনটো আগবঢ়াই দিয়া ৰাজহুৱা বা পাব্লিক সাৰ্ভিস ব্ৰডকাষ্টাৰ হিচাপে ৰেডিঅ'ৰ যি দায়িত্ব সেই দায়িত্ব আমি পালন কৰিব পাৰিম সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠানত অনাতাঁৰ নাট সমাৰোহ 2025ৰ শুভ উদ্বোধন কৰা হয় অনাতাঁৰ নাট সমাৰোহৰ শুভ উদ্বোধন কৰে আকাশবাণী নতুন দিল্লীৰ অনুষ্ঠানৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান পলিচি দীপক जोशीदेवे ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि अपने 57वीं वर्षगांठ पे भी मुझे आकाशवाणी डिब्रूगढ़ के इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका मिला है इससे पहले जब आकाशवाणी डिब्रूगढ़ का गोल्डन जुबली था तब भी मैं एक बार आया था और वो भी एक बहुत ही खुशी की बात थी मेरे लिए और आज जब मैं यहाँ आया हूँ तो ये विशेष कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के बारे में सुबह वर्कशॉप थी और अब ये रेडियो ड्रामा फेस्टिवल जो आकाशवाणी डिब्रूगढ़ शुरू करने जा रहा है साथियों ड्रामा से मेरा लगाव मुझे पता नहीं था ड्रामा क्या होता है जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी जो थोड़ी बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट लिया करता था वही शायद किस तरह से भविष्य में आगे बढ़ा है अब लगातार ऑडिशन करते हैं ऑडिशन की परमिशन देते हैं उस समय जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे और मैं छोटा था आप सब लोगों को भी शायद अंदाजा होगा कि हमारे सबके स्कूलों में एक हाउस वाली प्रथा होती है कि पूरे स्कूल को 4 हाउसेज में डिवाइड किया हुआ होता है और फिर सारे बच्चे जो होते हैं उनमें क्या स्पोर्ट्स की क्या को करिकुलर एक्टिविटीज़ की स्पर्धाएं जो होती हैं वो उन हाउसेज के बीच में ही होती हैं तो मैं एक हाउस में था जिसका हाउस का शीर्षक था शास्त्री हाउस कहते थे उसे बड़ी सादगी भरा हाउस था और उस हाउस का मैं एक छात्र मेंबर था जो हमारे टीचर थे जो हमारे हाउस को लीड करते थे ये शायद उस समय की बात है जब मैं 7वीं या 8वीं कक्षा में रहा हूँगा तो उन्होंने सारे जो भी छात्र थे हम लोग शास्त्री सदन कहते थे या शास्त्री हाउस कहते थे उनको बुला के कहा कि अब को करिकुलर एक्टिविटीज़ आने वाली हैं तो अपने अपने इवेंट्स में हम लोगों को अपना योगदान देना होगा रिप्रेजेंट करना होगा अपने हाउस को पूछा जा रहा था कुछ लोग शायद जिन्हें गाना आता था वो गाने के शौकीन थे उन्होंने अपना हाथ उठाया कि मैं गाने में पार्टिसिपेट करूंगा करके मैं बड़ा कंफ्यूज था मैंने किसी चीज़ में अपना हाथ नहीं उठाया क्योंकि गाना मुझे आता नहीं था और हाँ एलोकेशन डिबेट इसमें मैं पहले पार्टिसिपेट किया करता था लेकिन वो इवेंट पहले हो चुका था तो वो उस कल्चरल इवेंट का पार्ट नहीं था तो मैं ना पोएम रिसाइटेशन था उसमें ना स्पीच एलोकेशन था तो मैंने अपना हाथ नहीं खड़ा किया मैं चुपचाप खड़ा रहा मेरे टीचर आए बोले अरे तुम किस में पार्टिसिपेट करोगे मैंने कहा सर मेरे लायक शायद इसमें कुछ मुझे आता नहीं ना मुझे नृत्य करना आता है ना मुझे गाना गाना आता है तो बोले ड्रामा तो अब ड्रामा के बारे में मैं पूरी तरह से अभिनय की था कि क्या करना होता है करके मैंने कहा सर मुझे नहीं पता है क्या करना होगा ड्रामा में बोले नहीं ठीक है मैं तुम्हें कुछ बोलने के लिए कहता हूँ उसको बोल के बताओ तो उन्होंने जो उसका कैरेक्टर का एक मेन कर 2-3 डायलॉग्स उससे मुझे बुलवाए मैंने बोल जैसे उन्होंने कहा उस तरीके से मैंने उन डायलॉग्स को बोला पूरा हो गया उसके बाद फिर उन्होंने छांट लिए कुछ छात्र तो मुझे लगा कि मुझे तो पता भी नहीं था और क्या करना है मुझे ये भी नहीं पता है हाँ जिस तरह से मैं अपनी स्पीचेस देता हूँ तो उसी हिसाब से मुझे जो उन्होंने डायलॉग अब मैं कह सकता हूँ कि वो डायलॉग था वो डायलॉग डिलीवर करने के लिए कहा 3-4 डायलॉग जो कहे वो मैंने अपने तरीके से अंदाज में जो जैसे बोल सकता था वो बोले
तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि रणधीर का रोल तुम करोगे, रणवीर का। मुझे पता नहीं था रणवीर का रोल क्या है, तो पता चला कि रणवीर का रोल जो था वो विलन वाला रोल था। ये भी मुझे बाद में पता चला कि वो विलन वाला किस तरह था। आप लोगों में से बहुत लोगों ने वो कहानी पढ़ी होगी, राजस्थान के पन्ना धाय, जो एक राजा उदयवीर सिंह थे और पन्ना धाय जो थी उनकी मेट थी और वो मेवाड़ के राजा थे। उस जमाने में किस तरीके से राजपूतों में सिंहासनों के लिए लड़ाई होती थी या किस तरीके से अपने सिंहासन को बचाने की कोशिश की जाती थी। तो उसके तहत मुझे एक डायलॉग दिया गया, जो डायलॉग मुझे अभी तक याद है। थोड़ा सा मैं आपको बोल के सुना रहा हूं कि जब उस प्ले में, उस नाटक में, वो किरदार जो रणवीर था राजा, वो राजा उदय सिंह का बेसिकली कजन ब्रदर जिसे कहते हैं वो था, और उस राज्य को प्राप्त करने के लिए अपने भाई का जो है, भाई की हत्या कर देता है। भाई की हत्या कर देता है तो मतलब अब राजा उसी को बनना था, लेकिन उस भाई का बेटा था एक छोटा सा, जो बिल्कुल ही जिसे कहेंगे कि शिशु उसमें था। तो उसके किसी पहचान वाले ने, स्नेही ने कहा कि महाराज अगर ये, अब हम तो आपको महाराज कह रहे हैं, लेकिन अगर ये शिशु जिंदा रह गया तो राज जो होगा आगे जाके वो तो इसी को मिलेगा। तो जाता है, वो शिशु कहाँ है उसको ढूंढते हुए, जो उस राजा की जो थी पन्ना, जो मतलब उस बच्चे को संभालती थी, वो समझ जाती है कि अब इसका इरादा क्या है। तो उस बच्चे को छुपाकर अपने बच्चे को उसकी जगह रख देती है, और जब ये राजा आता है, आके अपनी कृपाण से उस शिशु का वध करता है और उसके बाद बुरी तरह से अट्टहास करते हुए हंसता है, तो वो जो पन्ना धाय जो है वो उसे कहती है कि ये आपने क्या कहा कि कर दिया, आपकी तलवार में ये रक्त लगा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिस करके हमारे उस आचार्य ने हमें सिखाया था डायलॉग डिलीवरी, और जो बोलने को कहा था वो कहता है, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, बिना रक्त के तलवार भी क्या कभी सुशोभित हो सकती है। सही बताऊं तो मुझे उसका वो भी मतलब नहीं पता था, लेकिन जिस तरीके से प्रैक्टिस कराई गई थी वो कर। लेकिन उस स्टेज से मुझे पता चला कि ड्रामा क्या होता है, कि शायद आप नहीं होते हो लेकिन फिर भी आप उसे एक्ट करते हो, उसको सामने वाले को बताते हो, उसे फील करवाने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है। लेटर ऑन फिलोसफिकली जब मैंने पढ़ा ड्रामास के बारे में, तो पता चला कि ड्रामा तो बेसिकली हर इंसान ड्रामा का एक कैरेक्टर है अपनी लाइफ में। कोई अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा है तो कोई मैनेज कर रहा है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है। जो अच्छे किरदार हैं, जो सत्कर्म कर रहे हैं, वो भी एक अच्छा किरदार है, और जो अच्छा नहीं है, अच्छे की तरह प्रिटेंड कर रहा है, वो भी एक किरदार ही प्ले कर रहा है। तो ये हम लोग बेसिकली देखा जाए तो अपनी जिंदगी में भी ड्रामा को रोज जीते हैं। हर इंसान कोई ना कोई किरदार रोज अपने जीवन में जी रहा होता है। तब मैंने जब थोड़ा और इसे आगे स्टडी किया तो पता चला कि ड्रामा इज अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। जब आप किसी सिचुएशन को पैक करके ऑडियंस को या एक ग्रुप ऑफ पीपल को समझाने की कोशिश करते हो, और जब उसको ढंग से देते हो, प्रेषित करते हो उसे, और आप कम्युनिकेट कर पाते हो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज को, वही एक ड्रामा, सक्सेसफुल ड्रामा के रूप में होता है। तो मेरा शुरुआत से ड्रामा से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन जस्ट क्यूरियोसिटी वाइज मैं ड्रामास की स्टडी करता रहा। सबसे पावरफुल मीडियम जो लगा मुझे ड्रामा का वो है स्ट्रीट प्लेज। आप सब कई लोगों ने किए भी होंगे, कई लोग उससे अच्छी तरह से परिचित होंगे कि छोटे छोटे लोग बड़े इम्पोर्टेंट इश्यूज को सोसाइटी में, समाज को समझाने के लिए किसी ऐसे ऑडिटोरियम में नहीं, लेकिन किसी एक नुक्कड़ में इकट्ठे होके उसको डिपिक्ट करते हैं, वहाँ पर उसका नाटक करते हैं, विमोचन करते हैं, एक्टिंग करते हैं, और अपनी ऑडियंस जो थोड़ी सी भी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो रखी होती है उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। तो नाटक के इतने सारे स्वरूप हैं। मैं आकाशवाणी डिब्रूगढ़ के इस इनिशिएटिव से हमेशा से इम्प्रेस रहा हूँ। शायद मैं जिस समय था यहाँ आकाशवाणी डिब्रूगढ़ में, तब ये चीज़ें नहीं थी, ये प्लेज नहीं किए जा रहे थे।
तो जब मुझे पता चला कि अब ये हम लोग ड्रामा फेस्टिवल के रूप में करते हैं इसे, तो ये बहुत ही खुशी हर्ष की बात है मेरे लिए, जो अचानक से ड्रामा के फील्ड को बचपन में रिलेट हुआ था, थोड़ा बहुत पढ़ा और इस तरीके से समझा। ड्रामा बहुत ही सशक्त माध्यम है, उसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए, हर पहलू को, हर सिचुएशन को अपने श्रोताओं तक पहुंचाने के लिए, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको समझाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस रेडियो फेस्टिवल में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स और ड्रामास को करके आकाशवाणी डिब्रूगढ़ एक बहुत ही शॉर्ट पीरियड में, इन 7 दिनों में, जितने भी दिनों में जितने ड्रामाज आएंगे, और वो भी एमेच्योर ग्रुप्स के थ्रू, बहुत सशक्त कोई मैसेज हमारे लिसनर्स को कन्वे करेगा। और बीच बीच में लगता है ना कि ड्रामा, कभी कभी ऐसा होता है कि मूवीज के कारण ड्रामा थिएटर जो है थोड़ा सा बैक स्टेज में आ गया है, तो ये एक बहुत अच्छा एफर्ट है हम लोगों का फिर से ड्रामा को अपनी उसी गरिमामयी अवस्था पे लाने के लिए। और चूंकि बाय डिफॉल्ट मेरा दिन ड्रामा से जुड़ गया है, तो मैं सबसे ज़्यादा हर्षित हूँ कि ये उसी तरीके से हमारे समाज को सिखाता है, ज्ञान देता है और अच्छी तरह से इन्फॉर्म करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आकाशवाणी डिब्रूगढ़ को इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट करने के लिए अपने आशीर्वचन देता हूँ। दिल्ली की तरफ से भी आशीर्वचन, आकाशवाणी महानिदेशालय की तरफ से। मैं साथ में आकाशवाणी दिल्ली डायरेक्टरेट में स्पोकन वर्ड्स सेक्शन भी देखता हूँ, जिसके अंदर ये ड्रामा सारे सेक्शन आते हैं। तो आप सभी लोगों को फिर से मेरी शुभेच्छाएं इस ड्रामा फेस्टिवल के लिए, आकाशवाणी डिब्रूगढ़ को। और सभी लोगों से कहूँगा कि प्लीज़ एंजॉय कीजिएगा, सुनिएगा, और उससे जो मैसेज कन्वे होगा उसको इम्बाइब कीजिएगा अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। धन्यवाद, जय हिंद। অনাতাঁৰ নাট সমাৰোহ 2025 কেন্দ্ৰ কৰি প্ৰচাৰ কৰা, প্ৰকাশ কৰা এখনি স্মৃতি গ্ৰন্থ ই সৌবনীৰ। আৰু এই বিশেষ কামটিৰ বাবে আমি মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰ্যালয়াধ্যক্ষ কে ৰেংমা ছাৰক। কেনিয়েলো কেণ্ট ৰেংমা ডাঙৰীয়াক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেত মঞ্চলৈ আহিব লাগে। অনাতাঁৰ নাট সমাৰোহ 2025 লগত সংগতি ৰাখি জিন্তু চেতিয়াৰ সম্পাদনাত এখন স্মৃতিগ্ৰন্থ ই সৌভেনিৰ উন্মোচন কৰা হয়। স্মৃতিগ্ৰন্থখনিৰ উন্মোচন কৰে আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ কাৰ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ কেনিয়েলো কেণ্ট ৰেংমাধৱে। We are able to be a part of this 57th year of broadcasting. In fact, 57th distinguished year of service to the people of the region. I say the region because Dibrugarh transmitter has the widest coverage in Northeast. And it is with a sense of thrill and pleasure that I also acknowledge the presence of many of our retirees, their family members, and of course I do acknowledge and I'm grateful to all the directors of the radio plays representing different amateur theater groups, 12 different groups. We will be looking forward to listen to the broadcast, and we are truly grateful to them. It is because of their talent, because of their expertise, and it is because of the commitment and the strength of the women and the men like them that Akashvani Dibrugarh is what it is today. We are truly grateful, and I take this opportunity also
to express my gratitude on behalf of Akashvani Dibrugarh to all the distinguished guests, their family members, and all the special invitees. We are what today it is because of you. And I also thank and acknowledge the presence of our casual assignees, our contractuals, our MTS, our DEOs, their family members. In fact, we are truly grateful to you for accepting our invitation to be part of this event. 57 years for some people, maybe just another milestone, another year. But for those people who have been associated with radio during its difficult formative years and who have been with radio, this is a big milestone, and we are today thrilled and fortunate to be part of this. Once again, I thank you all, and I thank our respected ADG administration, ADG content, ADG operations, and also I express my gratitude to our ADG headquarters who have come all the way from Delhi to be a part of this joyous occasion. Thank you once again for coming to this district library and making this historic event. Thank you all. সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা তথা অনাতাঁৰ নাট সমাৰোহ 2025ত অংশগ্ৰহণ কৰা অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিচালকসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আমি এই অনুষ্ঠানৰ মধ্যমণি স্বৰূপ অনাতাঁৰ নাট সমাৰোহ 2025ৰ যিসকল নিৰ্দেশকক আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছোঁ, তেখেতসকলৰ মাজৰ পৰা আমি শিৱসাগৰৰ নাট্যপীঠৰ প্ৰশান্ত শৰ্মা ডাঙৰীয়াক খুব চমুকৈ দুআষাৰ ক'বলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰই আয়োজন কৰা ৪ৰ্থ বৰ্ষৰ এই অনাতাঁৰ নাট সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাই আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। আধুনিক অসমীয়া নাটকৰ এক আনুষংগিক ধাৰা হিচাপে অনাতাঁৰ নাটকে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ এই নাট সমাৰোহৰ যোগেদি এই গুৰুত্ব সৰ্বব্যাপী হৈছে। বিশেষকৈ অপেচাদাৰী নাট্যদলবিলাকৰ অনাতাঁৰ নাটক প্ৰযোজনা বা পৰিৱেশন সম্পৰ্কে যি অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতাৰে নাট্যদলসকল পুষ্ট হৈছে আৰু এই নাট্যদলসমূহৰ নাট্যকৰ্মকো ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰই স্বীকৃতি দিছে আৰু কেন্দ্ৰৰ মুৰব্বী ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে ভাষাৰ শুদ্ধতা আৰু প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰত এই নাট্যদলসমূহৰ যোগেদি ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰই ভিন্ন বিষয়বস্তুৰ নাটকেৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইতিহাস ৰচনা কৰিছে। কাৰণ ইতিপূৰ্বে হৈ যোৱা নাট সমাৰোহবিলাকত যিবিলাক নাটক পৰিৱেশিত হৈছে, সেই নাটক শ্ৰোতাই অত্যন্ত আনন্দেৰে আদৰি লৈছে। কাৰণ ডাক পখিলীৰ চিঠি শুনি থাকিলে আমি তাৰ খবৰ পাওঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ এই 25 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰই যি সমাৰোহ আৰম্ভ কৰিছে এটা নিৰ্দিষ্ট বিষয় লৈ নাৰী সবলীকৰণৰ ওপৰত বিভিন্ন নাট্যদলে ভিন্ন দৃষ্টিকোণেৰে নাটক পৰিৱেশন কৰিব আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে পূৰ্বৰ নাট সমাৰোহৰ দৰে এই নাট সমাৰোহেও আমাক এক নতুন অসমীয়া নাটকৰ সোৱাদ দিব। আমাৰ নাট্যদল শিৱসাগৰ নাট্যপীঠে কিছু তহবিলদাৰৰ দহন নাটক আমি পৰিৱেশন কৰিছোঁ। আমি আশা ৰাখিছোঁ যে পূৰ্বৰ যিখিনি নাটক তাৰ দৰে আমাৰ গৰিমা অটুট থাকিব আৰু এই সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে ডিব্ৰুগড় অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰক আমি কৃতজ্ঞতা নিবেদন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। এইবাৰ আমি এটি আধুনিক গীত উপভোগ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ আৰু গীতটিৰ শিল্পী হৈছে আস্থা গোস্বামী।
তীরে বীরে কৰে সেউজী পাহাৰৰ লাহেকৈ নিজৰা ৰ'দ তীৰে বীৰে কৰে শিলনিৰ মাজেৰে জিৰি জিৰি কৰি তললৈ পিছলি পৰে তললৈ পিছলি পৰে সেউজী পাহাৰৰ লাহেকৈ নিজৰা ৰ'দ তীৰে বীৰে কৰে নিসা নিসা রে সারে সারে মা নিধা পা ধা পা মা পা মা গা গা মা ধা পা পর্বতর মরম বুকু সাত বান্ধি লৈ ভৈয়ামত বিয়তি পৰে পৰ্বতৰ মৰম বুকু সাত বান্ধি লৈ ভৈয়ামত বিয়তি পৰে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাব খুজি আবেগে খাবতি ধৰে একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাব খুজি আবেগে খাবতি ধৰে সেউজী পাহাৰৰ লাহেকৈ নিজৰা ৰ'দ তীৰে বীৰে কৰে
ও গধূলি বেলিয়া ও পদুলি ওলায়া ও হরি হে রোহিণী যখুদা মাই ওয়ে তো রাতি হইলা বুলিবে লাগিলা নাহিলা কানাই বোলাই নাহিলা কানাই বোলাই পদুলি বেলিয়া পদুলি ওলায়া ও হরি হে রোহিণী যখুদা মাই এ তোরা কি হইলা ভুলিবে লাগিলা নাহিলা কানাই বোলাই নাহিলা কানাই বোলাই ও হাই হৰিয়ে সংগৰ হকিগণ লৈয়া গুধন গৃহ মাজে প্ৰৱেশিলা গৃহ মাজে প্ৰৱেশিলা ক্ষীৰত ধিয়ন কৰিয়া ভোজন মনে কৰিতে লৈলা হয়ন কৰিতে লৈলা পদুলি বেলিয়া পদুলি ওলায়া ও হৰি হে রোহিণী যখুদা মাই এ তোরা কি হইলা ভুলিবে লাগিলা নাহিলা কানাই বোলাই নাহিলা কানাই বোলাই ওখে উঠি মালতী ডাঙৰ মায়ৈ সৰু সোমাই ঢোল পেপা গগনাই বিহু লৈ কেৰিঙিয়াই বসন্তৰ বলাবাৰ গাতে জানো লগা নাই কুলি কেতে কিমাত কানে জানো শুনা নাই নাচ হে উঠি নাচ মালতী কঁকালো ভাঙি ভাঙি হাতেনো মেলি মেলি নাচ ও দেহিও হে মাজ নিশা কান্দিলে ও বিৰহী কেতে কি ও লগৰী হেৰা লেঐ বুলি মই জান কান্দিছো অ তোমাৰে বেজা নতৈ অ কি জানি এৰিবা বুলি মেঘে মাদে গাজনি অ নয়না
জাতি বাগৰা গলি ও কাটিলো চাচি চুচি ঐ গাজিলো মই গগনা ঐ বিহুৰ তলিত বজাবি শুনিবলৈ শুৱনি কৰি যাৰ কাঠৰ নাঙলৈ সৰু মাই যামেনো পথাৰলৈ হাই ঐ সৰু মাই কলা কজলা কাকতে লৈ বোকা মাটি ময়াই দিম সৰু মাই কঠিয়াও মই বোলাই দিম হাই ঐ সৰু মাই আহিবিনে ৰুবলৈ মোৰে মৰমৰ ৰোৱনী গৈ হদিয়া ৰাজতে চাৰিহাল গোসানী হদিয়ালৈ কৰি যাওঁ সেৱা কিয় তে পানী ৰাজতে কলীয়া বাবা গোসানী ঐ তালৈকো কৰিছোঁ সেৱা কিয় তেহুগুটি পকা নাই না ফুলা নাই বিহু লগা নাই গাতে ৰবা খুদেও বিহু লগা নাই গাত গাঁৱৰে কালদাই জোৰ পাতি অহা নাই গাতে তেল লোৱা নাই গাতে ৰবা খুদেও গাতে তেল লোৱা নাই গাত লালৈ হালি কি চৰাই লালৈ কিৰিলি পাৰিলে লালৈ কিৰিলি পাৰিলে লালৈ গছৰ গুটি খাবলৈ পায় লালৈ আমাৰ সমনীয়াই লালৈ কিৰিলি পাৰিছে লালৈ বহাগৰে বিহুটি পায়